अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फॉर्म पट्टी है। तो असा आया मैं इधर HE वेल्स में वो बेवल इंटरनेशनल के फंड रेजिंग डिनर में थे to raise more money inshallah for the hospital that's happening. Fine. आज मेरे साथ अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज इधर चेयरमैन ती के असा नाल ते तो असा की थोड़े एक्सप्लेन कर सना आज इवेंट ना क्या हो रही है। अच्छा दसो थोड़ा लिबरेट करो इवेंट ना क्या हो रही है आज, क्या मसला है, क्या मकसद है? देखो जी, मकसद एक ही है कि असा जो अस्पताल बनाया बेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल जरा प्रोजेक्ट असा 2005 भी शुरू किया उसने सिलसिले से जड़े पिछले सालों स्लो फंक्शन होने रहे और उसने ये कंटिन्यूशन है आज कि आज उसने सिलसिले से फंड रेजिंग जरा इवेंट होना पाया वॉकिंग इस दफ़ा और ये जी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी सी ARM ट्रस्ट तकरीबन बैक इन 2005 वो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बनी सी कि असा इस इलाके कैसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना और इंशाअल्लाह असा वो हॉस्पिटल जरा 2005 भी शुरू किया था वो असा 2010 जरा वो कंप्लीट करी छोड़ा और आज सारा वो अस्पताल जरा वो कंप्लीट होने के बाद वो फंक्शनल स्टेट ही जा और असा की बड़ा फख्र है कि सारी ड्रीम से वो एक रियलिटी बनी और आज हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने चाहिए। जरा आज माशाल्लाह एक जरा फंक्शन जो करी हो आज तो इसना कितने आदमी एक्सपेक्ट कर रही हो? असल ये एक्सपेक्टेशन ही है जी कि इंशाअल्लाह आज भी फंक्शन ही है इतने ज़बरदस्त वेन्यू और इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन हुई over 300 people should come and we're expecting obviously more than 300 people and as like before कि जड़े सारे slow function हुए जड़े slow ने सारे पहना जड़े function organize किए और इस तरह से पहले कामयाबी हुई आज दोबारा इस function में जड़ी है बहुत बड़ी कामयाबी हो सी। Thank you very much. Thank you. We start, before I do the welcoming, can I ask Hashmi from the Working Mosque to just start بسم الله الرحمن الرحيم. Because this is a great cause. If you look at your programs which describe the work of the Bewal International Hospital, on the front page it says, transform our dreams. Woking, can I bid you a very, very warm welcome. Woking is home to McLaren, the famous world-beating Formula One team. It's also home to Woking Football Club, a very vibrant, multicultural community where we all get on well and we all pull together for good causes, whether they are in our town, in our country, or internationally. And tonight we've been gathered here together to support a very, very worthy cause indeed. I thought to be able to have a health service that is free at the point of need for everyone who needs it. If we can try and introduce some really first-class medical care to other communities around the world, particularly when we have close personal or family links, as many later on. This hall brings back interesting memories for me, because it was the hall in which I was first selected as the Conservative candidate. I don't think that I've seen as many people here since that day in all the 3 years as the Member of Parliament here. So I can see that it is a really, I think that is a sign that we are going to have a very successful fundraiser here this evening. And I congratulate those of you who have helped to organise it. As I say, it is wonderful to have so many visitors to this fine town of Woking. Can I also just, I know that our local Maybury and Shearwater councillors are here. I've seen Councillor Iqbal earlier on. And of course I'm delighted that on our local council. So as in Slough, the Muslim community, if you like, are making wonderful contributions, not just to their own towns, but also they are making sure that their leadership skills, their generous instincts, is like this.
So I welcome you all. I know we're going to have a very successful and a very enjoyable evening. Shahid, thank you very much, Jonathan. Can I actually ask everybody to, if you can turn your mobile phone, if not, in silence, please. Thank you very much. If you find out if they're not silent, there's a fine for the hospital. So I've said all the nice things about you, so you missed it all, so I'm not going to say anything else now. So thank you very much. Thanks, mate, for driving me down well. So I won't do the formal sort of welcome to you, we'll do that later on. Next. Thank you very much. I'm delighted and honoured to be invited to speak at your 5th annual charity dinner here tonight in Woking. My good friend Dylan McTaggart and your local MP Jonathan Law has met tonight for the first time. We sort of did the benches in the Lords. Hope you're happy that I've got my new friends in the House of Lords from today. Can I say, though, it's an honour to be here with you. The health of the people was the councillors around the country before the Second World War. I think that conscription is important today as it was then. If we're ill, needed medical treatment, are vulnerable, we're frightened and maybe even desperate. Or what's even worse, treatment they need. That is why the work of the Abdul Rahman Trust is so important. Supporting the Bewal International Hospital for medical treatment, the hospital provided to the poor and needy at no cost to them. That is why we're all here together. It is a privilege we have enjoyed in the UK since the 5th of July 1948, 64 years ago last week. It is a value dear to my heart, and I'm sure yours. A privilege we all enjoy. Thank you very much. I think we're going to now invite Dr. Ateek on the floor here now to actually talk about exactly what's been going on at the hospital. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let me say thank you very much for all of you to be here this evening. And let me say thank you very much, Saida, for coming and for this evening. It's been great to see you once again here this evening. South Zone Committee, Chaudhry Ishtiaq and Shahid and all the MPs and Lords, obviously who've been here, and Fiona who said a wonderful word and I would say set the scene. Why we started the project and why we're doing it. Who don't know me much, but I'm a consultant vascular surgeon in Dudley, but just in the Black Country. I qualified from Pakistan and I came here in the early 90s, obviously to join my family, and my father's been here like maybe most of you been here in early 60s. That's where I did my basic surgical training. And then I went on to do my high surgical training in Russell Hall Hospital, Dudley. So that's the way I go. Once I was appointed a consultant, and I thought I'm going to spend most of whether I accept it or not. Part of the country, and that country where I belong, my parents and my own, the family comes. It's devastating. I worked 1 year in the Holy Family Hospital and Albany General Hospital, and the atrocities, the difficulty in few minutes to 2 hours. And I thought, I can't do much about it, but at least I can do something. And that's the way how I started. And I thought if everybody who is capable of doing something, I'm sure that can make some difference. The way he did everything for me, I'm sure every dad and every father does the same thing for their kids. But what happened? He suffered from a disease which I couldn't do anything. My younger brother is also a surgeon. He's a maxillofacial surgeon. And I can tell you, when he used to come back home, back in early 2002 and 2001,
I used to do the hospital, operations for 8-9 hours. But I got back home, and when I used to see my father, I couldn't do anything. Because he suffered from a disease called motor neuron disease, where I couldn't do anything. And he used to look at me and smile. And believe me, I used to cry, not in front of him, but just going outside, because I couldn't do anything. I could do a lot of things to a lot of other people. I could stand in the hospital and do the operation for 8-9 hours to save people's lives. But I couldn't do anything for my father. But that's the way how the life was. That's the way how Allah subhanahu wa ta'ala, does the life. If this was the thing which was in our hands, maybe a lot of kings, a lot of, the princes and princesses would not have ever gone. But that's the way how the life carried on. So that was one thing I said. The healthcare is very, very expensive. And I'm sure a lot of MPs and lords and everybody knows in this country, if you look at the total healthcare budget in this country, it's really wonderful. And so many new faces, so many new friends. And if I can make one more friend out of this, it will be wonderful for me. Thank you very much. Thank you, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Being involved in the Bewal Hospital Trust. A huge thank you. I know Iqbal would like me to say that on behalf of the Trust. When this journey started about 5-6 years ago, when we first met in Dewsbury to talk about this vision that Iqbal had, it was almost seen as an impossible task, something, a huge mountain that could possibly not be climbed. And I remember saying at the time, okay, look, we've seen Imran Khan do this in Pakistan, and I've मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कहा आप चाहे इमरान भाई जैसे इतने ही आप गुड लुकिंग हैं, इतने ही आप स्पोर्टिंग हैं, इतने ही आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन कहाँ इमरान और कहाँ मेरे अलीफ भाई बेवल से? I said it's not going to work. It's going to be a huge task. How are we going to manage this? But you said, as you said today, if you have the right intentions and you have the vision and you're prepared to start taking those small steps, people will walk alongside me and we will make this happen. And you were right. To God or some conflict these days, the media is so powerful. As Saida said, मैं बड़े फख्र के साथ ये महसूस करता हूँ कि पिछले 6 साल में जब से हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, हमारी एक पैनी भी साउथ जोन की कभी किसी एक्सपेंस पे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और शायद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ओके बिकॉज इज होल्डिंग द 5,000 pound and I don't want to angry with him, and he said he will do after that, and now he is going to run the plan as he have a plan for the function. Thank you very much everyone. 700, this is going well. We'll call it 2,000. You might have an opportunity to buy something else. Unique presents. Okay, 2,000. Thank you so much. Thank you very much. We've got the next one. If you can get 3.5. 3.5. Fantastic. 5,000. 5,000. Thank you so much. 5.5. 5.7. 5.7. 5.7. You thought, Muhammad Ali did sign these gloves. Are you still happy with that? Yeah. Thank you. Thank you so much. So, I better not go back to Slough again. I think I'll stay home. Thank you so much. I
फोटो लिया जी नाल नाल अच्छा ना पंजे Okay, so look at that. Okay. Here we go, guys. All right, eyes are straight. Lovely, well done. Thank you. Yeah, I did it as well. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम जी साढ़े नाल भाई असगर और टोक बाबा बुलंदियां सू तो इन्होंने को पूछने आज किस तरह फंक्शन रहा। फंक्शन बड़ा अच्छा रहा जी। अज काफ़ी कि अपनी स्लोनी आवाम इकट्ठी है अपने चोए खालसे ने बेवल ने बंदे जमा है बड़ी गहमा गहमी है शायद वारसी भी मौजूद ही साढ़े डॉक्टर ठीक और रहमान इलाके ने बंदे अस्पताल ना फंक्शन मना रहे खुशी मना रहे कि बड़ा अच्छा अस्पताल इन्ना 5-6 साल ही तैयार हो गया तो सारे कम्यूनिटी पठवार ने खिते ने सारी तामन नाले सारा सिलसिला है और इंशाअल्लाह इंदा भी सारा इस अस्पताल नाल तामन ऐसी कोशिश कर सकते। अस्सलाम वालेकुम साढ़े नाल हाफिज सईद हाशमी और पेर अली चो खालसा सू तो इमाम वॉकिंग मस्जिद तो इन्होंने को पूछने हैं कि आज किस तरह फंक्शन रहा। To all the viewers from all over the world, they are watching me and listening me today. आज का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत फंक्शन था। बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ जो खालसा के स्लो से वॉकिंग के अपनी के लोग और ख़ासकर बेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जो कैंपेन थी और इसका जो काम था और जो डोनर थे उस सिलसिले में हमें आगाही हासिल हुई और मोहतरम नसीर साहब को मिला हूँ यहाँ पर और मैं इनकी तवसल से सारी pothwar.com की टीम को और सारे व्यूअर्स को और सारे इस वेबसाइट को सपोर्ट करने वालों को इस बेवल इंटरनेशनल हॉस्पिटल को सपोर्ट करने वालों को सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त अता फरमाए और सबको बहुत तरक्की अता फरमाए और बिलखुसूस नसीर साहब और pothwar.com जो काम कर रहे हैं यकीनन जो है ये पूरी दुनिया के अंदर आपने सारे लोगों को जोड़ दिया है। सुबह सुबह उठकर जिस तरह लोग पहले जंग पढ़ा करते थे नमाज़ वक्त पढ़ा करते थे BBC न्यूज़ देखा करते थे और यकीनन मेरे साथ बहुत सारे लोग ये हज़ारों में आवाज़ होगी। अब हम सुबह उठकर pothwar.com का जो है वो स्टडी करते हैं मताला करते हैं। पाकिस्तान के अंदर कलर सईदा गुजर खान पूरे यानी पोठवार के अंदर जितनी भी नुमाइंदगान हैं सबको मैं बार पेश करता हूँ कि वो अपनी एफर्ट्स को पूरा करते हैं खबरें इकट्ठी करते हैं और अपलोड करते हैं। अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त खैर अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, pothwar.com जिंदाबाद, चुआ खालसा जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम साढ़े नाल भाई ताज और सदा कमाल सू तो आज सदे की सारी टीम बैठी थे तो इन्होंने को पूछते हैं आज किस तरह फंक्शन रहा जी। अच्छा रहा और सारे क्या सारे इलाके में कम है। मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम साढ़े नाल भाई सफदर और बेवल सू तो इन्होंने को पूछना जी आज की अज फंक्शन रहा। माशाअल्लाह जी बड़ा अच्छा फंक्शन सी स्पेशली वॉकिंग ने बंदियां ना थैंक यू जिहड़े कि इतनी अच्छी गैदरिंग की थी स्पेशल थैंक फॉर द होल स्लो पीपल एज वेल। माशाअल्लाह बहुत अच्छा और बहुत ही कामयाब फंक्शन सी सारे दोस्तों की गुजारिश है कि हमेशा इस तरह हाजिर हो। थैंक यू पिछू ग्राम थैंक यू भाई ज़बरदस्त जी। साढ़े नाल भाई और सईद मिर्जा और मजोठे सू तो इन्होंने को पूछना जी आज किया जा रहा फंक्शन। फंक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा जी। बड़े लोग आए बड़ी दूर लोगों जोश जज्बे हिस्सा अस्सलाम वालेकुम जी साढ़े नाल भाई रशीद और हबीब रशीद और बेवल सू इन्होंने को पूछने जी कि आज की अज फंक्शन रहा। फंक्शन जो बहुत अच्छा रहा
और काफ़ी जोड़ा लोगों जो इतना हैल्प की पठवार.com इतना इन्होंने भी जनाब शुक्रिया इतने इन्होंने और काफ़ी सारे इतने जोड़े आए हुए मीडिया ने जोड़े बंदे आए हुए अस शुक्रिया उन्होंने अदा करने और बड़ा ही मेरे ख्याल जानी ना सक्सैस जो रहा इन्होंने जितना फंक्शन रहा अज और फंड रेजिंग होनी थी और इंशाल्लाह मेन जी चीज़ है डॉक्टर तीर साहब और उन्होंने यानी ना ये वादा किया सारी आवाम नाल इंशाल्लाह के जनाब गरीब जो बंदे उन्होंने फ्री इलाज होया कर सी और जोड़े बंदे इस काबिल के पैसे दे उन्होंने पैसे दे तो बहुत ही अच्छा फंक्शन होया और असा जो क्रेडिट इसमें सारा जनाब देने पे जितने अवाम है जनाब पठवार नहीं जितने तावन बंदियाँ किया जितने करने पे उन्होंने सारे की और बहुत बहुत शुक्रिया जी और पठवार.com की असा बड़ा जोड़ा इसना क्रेडिट देने कि डे 1 तू बेवल इंटरनेशनल अस्पताल ने नाल भाई नसीर और जोड़े वे डे 1 तू लगे हुए जनाब और उसकी प्रमोट करने पे जिस वजह से हर एक बंदे जी खबरों पहुँचियाँ सारियाँ पियाँ और डोनेशन जोड़ा इतना पे तो थैंक यू ऑल ऑफ यू जी मेहरबानी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी साढ़े नाल शफीक उर रहमान साहब ने डांगरी शरीफ से तो इन्होंने को पूछने जी कि अज बेवल का फंक्शन किस तरह रहा तुसाने ख्याल माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा फंक्शन से लोगों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया थोड़ा और हॉस्पिटल देख के दिली खुशी हुई है कि उसे गरीब आवाम ने अपना इलाज मुआवजे का बड़ा बेहतर बंदोबस्त हो रहा है तो अल्लाह ताला इन्होंने काबशाह कामयाब करे और इस्तेफादा हासिल और लोकल कम्यूनिटी अपील है कि वो ज़्यादा तावन करें ताकि इस सदका जारियत है काम होता रहे और लोग इस्तेफादा हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी साढ़े नाल अज डांगरी सो मुअज़्ज़म साहब है तो इन्होंने को पूछने जी कि अज ना फंक्शन किस तरह रहा। कश्मीर डांगरी बादल तो आज का प्रोग्राम जो है बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम होया एक अच्छी एंटरटेनमेंट सी और बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम से सारी कम्यूनिटी जी है गैदर हुई है UK पीपल लिखा है और एक अच्छा जो खास डॉक्टर तीक साहब ने और चेयरमैन इश्तियाक साहब ने एक अच्छा खास और एक अच्छी कोर्स सी सारी कम्यूनिटी गेट टुगेदर हुई है और it was a brilliant and excellent program and we all enjoy that and that's what I can say. Thank you. अस्सलाम वालेकुम जी आज किया जा फंक्शन रहा जी। वालेकुम सलाम जी पहले तो मैं तारफ़ का मेरा नाम इफ्तार है मेरा स्मोट माले करे मास्टर साहब और आज ना प्रोग्राम माशाल्लाह चौधरी इश्तियाक बना और सारी साथ सोनी टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम होना है और मेरा ख्याल है कि हमेशा नहीं तरह आज भी बहुत कामयाब और बेहतरीन प्रोग्राम। मेहरबानी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी पशफीक और सारे सलाह होता है टोक बाबा फैज बख्श हूँ पशफीक आज किया जा रहा है फंक्शन जनाब फंक्शन नहीं क्या गल कर रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा फंक्शन होया और असल की बड़ा ही फख्र है कि पठवारनी कम्यूनिटी और खासकर बेवल ने तो गिरदोनवा ने जितने भी लोग हैं उन्होंने बड़ा अच्छा हिस्सा किया और बढ़ चढ़ के उन्होंने मदद भी की और ये साढ़े वास्ते बड़ी फख्र की गल है कि बेवल अस्पताल साढ़े इलाके में बनया और असा शुरू दिन तो इसकी मदद करने रहे हैं अस्पताल की सपोर्ट करने रहे हैं कहना भी अस आपू भी सपोर्ट करता और सारे दोस्तों और बुजुर्गों और जितने जानने लोग
रिक्वेस्ट कर सा कि जितनी भी मदद हो सकनी प्लीज़ इस अस्पताल की कामयाब बनाओ ताकि जी साढ़े लोग जो जान बचाने वाले गरीब लोग हैं उन्हें इसका फायदा पहुँचे। थैंक यू, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। साढ़े नाल भाई गालिब और मजोठे सो ते शेरा ने ऑर्गेनाइजर भी अज भाई गालिब की है फंक्शन अज बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होया जनाब बेवल हस्पताल वास्ते इतना ज़बरदस्त फंक्शन होया और मुझे यकीन है कि अगे भी इंदा भी आने वाले भी फंक्शन बड़े अच्छे होंगे। इस पहले भी बड़े अच्छे फंक्शन होने अल्लाह कामयाब करे और असी बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रहे हैं और मेरी टीम भी आई भी शेरा दी आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तलत साहब जनाब टकाल तू वो 2 महीने रहने असा वैसे हर हफ्ते इतवारें शाम को PWA के दफ्तर असी प्रोग्राम करते हैं हर इतवारें इंशाल्लाह रमज़ान तो बाद परमानेंट शुरू कर पाई मेरे बहन आई वैक जनाब सतार नवाज और बड़े अच्छे प्रोग्राम करने और इंशाल्लाह असी मैं इन्होंने प्रमोट होर कर रहे हैं इंशाल्लाह TV भी असी आवांगे और बाकी के जोड़े लोकल रेडियो स्टेशन असी उत्थे जाते हैं IWAC रेडियो स्टेशन है असी उत्थे पहले भी गए थे हूँ मैं अपनी दोबारा टीम रमज़ान तो बाद लैके जा रहा और ईद तो बाद इंशाल्लाह सारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा PWA दे विच क्योंकि चौधरी करम साहब ने सूँ आ कहा कि असी तो प्रोग्राम करना मैं ऑर्गेनाइज कर रहा इंशाल्लाह कामयाब होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके और जितने मैं लोकल पटवार के बंदे मैं रिक्वेस्ट करना UK जो रह रहे हो साढ़े नाल तावन करने इस मसले मेहरबानी मेहरबानी। मैं फंक्शन फिनिश होया ते बाहर निकले हैं तो माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल फंक्शन होया इत्थे ते काफ़ी पैसे फंड रेजिंग हुए हैं। आमिर खान के बॉक्सिंग ग्लव भी ऑक्शन में थे वेरी आई थिंक £2000 द बॉक्सिंग ग्लव्स वेंट फॉर सेल ते और भी कुछ मोहम्मद अली के ग्लव्स भी थे तो बहुत ग्लव्स भी थे तो माशाल्लाह द फंक्शन वेरी वेल तो डिनर भी बहुत अच्छा गया है सो इंशाल्लाह द हॉस्पिटल get good funding in the future.